नमस्कार दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। नॉलेज शेयरिंग को बढ़ाते हुए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ई इनवॉइसिंग। सर, ई इनवॉइसिंग ई इनवॉइसिंग हमें पिछले 6 months वी हैव पास नाउ। टुडे वी आर नाउ ओवर हियर ऑन द मार्च 2021। आज हमारे सामने आने वाले समय में बहुत ही स्मॉल टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर पे ई इनवॉइसिंग इज नाउ बीइंग एप्लीकेबल। So we are close to completing 6 months of the e-invoicing journey in India. From rupees 500 crore से आपका 100 crores आया, 100 crores turnover से अब now the business with a turnover of over 50 crores of rupees in any financial year. Please note down that financial year 17-18, either financial year 17-18, either 18-19, 19-20, 20-21, in either of the financial year, if your turnover has crossed rupees 50 crores of rupees, then with effect from 1st of April 2021, you are required to implement the e-invoicing. You have many questions. आपके सामने बहुत सारे questions होंगे कि इनवॉइसिंग कैसे बने। क्या पोर्टल के ऊपर जाकर के मुझे अपनी इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी अपनी इनवॉइसेस की, या पोर्टल से ही मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी? सो इफ योर बिजनेस और योर क्लाइंट्स बिजनेस fall in this category, then you will need to find a fast, secure and dynamic solution for your business. One option is either obviously given by the GSTN, the government, which is the Excel tool. On that basis, you can generate your e-invoicing. IRN number must be printed over there. So there is some thing was there when with while the Excel is very free. So now the business with the thousands or the number of the invoices, so it's very inconvenient, time consuming job. So you have to require a software. There is always a risk of the human errors involved in this Excel tool. So on the other hand, there is an option of the ERP integration with the invoicing portal, but that involves very adhering to the various regulatory requirements. Other challenges are with the segregation of the B2B and the B2C invoices, because you have to generate the B2B invoices only in the case of the invoice. So as you know, the invoicing is only applicable for the B2B invoices. Cancellation is also a criteria. 24 घंटे के अंदर आपको cancellation करना ही पड़ेगा. Data reconciliation is must. Data reconciliation with the GSTR1, data reconciliation with the EWB portal, data reconciliation with the books of account. So that's why I wanted to recommend to introduce a one-stop solution that is the fast, dependable, and the affordable solution. A solution that take care of your all needs, your challenges that I mentioned about. So whatever the solution may be, which is I can say it's very either of the solution or the software is very easy to connect, very easy to understood. It can be easy and fast and scalable. Reliable information must be there. Security information must be there. Future ready information, technology driven is also there. And it's very also value for money, and there must be a support. So I'm talking about the Cleartax, which is I'm using that software also. So very good software for the reconciliation purpose. Very good software. It's a very household name for the filing of the either of the income tax and now the number one GST also. In fact, it is a very comprehensive solution at very affordable price. So one by one, we are discussing about the easiness of the software, how it can be done, how it will be proceed. So I have my PPT is there, and my I'm also give you a demo, a short demo regarding the how the e-invoicing or the IRN number must be generated on the B2B invoices. So I'm sharing my screen. Okay, 1 minute, sir. Yes, it's a sharing of the screen application. So now this. So the Cleartax is simplifying the lives of the people. It's a very content. What is the e-invoicing for? Obviously, e-invoicing is applicable only for the B2B invoicing and only for the export transaction. It is not used
for the B2C invoices. Obviously, B2C invoicing in the case of turnover exceeds 5 crore rupees, then with effect from 1st of April 2021, it's a mandatory requirement for the taxpayer that the dynamic QR code must be printed on the invoicing. So what is the benefit of implementing the e-invoicing? It is to curb the tax evasion. It will be efficiency or boost of the tax administration process. It will ease of the compliance, automated updation. Likewise, in the previous, when we are uploading any information regarding the EWB portal, e-way bill bana, e-way bill से direct information fetch हुई GSTR1 में. Similarly, जैसे ही e-invoicing बनेगी, इनवॉइसिंग से डेटा फैच होगा GSTR1 में, GSTR1 से डेटा फैच होकर के GSTR3 भी, और इट इज I have to take care of all these needs and reconciliation must be there to check कि कौन से कौन से इनवॉइस नंबर की इनवॉइसिंग हुई है, कौन से नंबर की इनवॉइसिंग नहीं हुई है. So there must be a reconciliation tool, a handy reconciliation tool must be I have. So there is an exemption of the applicability of the e-invoicing, like for the insurance company, banking company, financial institution company, GTA, or the passenger transportation company, or I can say the cinematographic films or the multiplex services or the SEZ unit के ऊपर e-invoicing की applicability नहीं होगी. कौन कौन से डॉक्यूमेंट की इनवॉइसिंग होगी आपके इसमें? डॉक्यूमेंट्स कवर्ड होते हैं टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, और ऑब्वियसली अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई है तो उसके केसेस में आपकी बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान बनता है, तो उस केसेस में आपकी इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती. सो द ट्रांजैक्शन व्हिच आर कवर्ड अंडर द इनवॉइसिंग इज द B2B इनवॉइसेस, आपके एक्सपोर्ट इनवॉइसेस और द बिजनेस टू द गवर्नमेंट. अनदर an important criteria about the e-invoicing. इनवॉइसिंग का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आपको पोर्टल पे जाकर के इनवॉइस अपलोड करना है. आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, एक आपका एक हैंडी टैली का सॉफ्टवेयर है, बीजी का सॉफ्टवेयर है, और व्हाटएवर द कोई भी अकाउंटिंग आपके पास सॉफ्टवेयर है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा API के थ्रू या GSP के थ्रू. और आपका क्लियर टैक्स भी उसी तरीके का एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक टेली कनेक्टर दे देता है, बिजनेस बीजी के साथ इंटीग्रेटेड फैसिलिटी दे देता है, वो आपको कनेक्ट कर देता है ई इनवॉइसिंग के पोर्टल के ऊपर जाकर के. जैसी आप बिलिंग कर लेते हो अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, और जैसे ही क्लियर टैक्स के साथ आप इंटीग्रेट करते हो और पोर्टल के ऊपर जैसे आप लॉगिन करते हो, आपको जस्ट एक बटन प्रेस करना है, जनरेट द IRN. सो द IRN नंबर मस्ट बी प्रिंटेड on a particular tax invoice. What is IRN? It is the invoice reference number. It combines the taxpayer, the GSTN, the financial year, document type. It's a very 64-digit alphanumeric character. It's very unique tag, hashtag I can say, must be different from one particular invoice to another particular invoice. So it must be appear on the e-invoicing, but without IRN number, the recipient is not being available. उसको आपका ITC availment वो नहीं कर पाएगा. As per the rules of the as per the CGST rules, or the I can say the 48 rule 48, that specifically says if the IRN number is not printed on that particular tax invoices, then the credit is being denied to you. So for the recipient, I have to check whether my supplier is covered under the invoicing or not. Or obviously, with effect from 1st of October 2020, turnover limit was the 500 crores. And then after the 1st of January, turnover limit is now the 100 crores. Now with effect from the 1st of April 2021, the turnover limit is now will be rupees 50 crores. So mostly of the high rise turnover taxpayers are covered under the invoicing. उनको इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी और IRN नंबर प्रिंटेड कराना पड़ेगा. QR code must be there, a unique IRN must be there on a particular tax invoice. Similarly, these are the information, these are the integrated transmission to the GSTN. Then the GSTN will prepare and take away the IRN number. So this is the flow and the implementation of the e-invoicing. I have my ERP like the SAP, Tally, ERP, custom ERP solution.
मैं उसके साथ एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करता हूँ, क्लियरटेक्स मुझे उसको मदद करता है उसके थ्रू कनेक्ट करके ई इनवॉइसिंग के पोर्टल के ऊपर ले जा करके। और जैसे ही मैं भी आपको डेमो दिखाना चाहूँगा, इट्स वेरी वेरी इजी टास्क, very easy task. I have used that task. You can also refer your client, and there is a something percentage of the discount must be given to your client and must be referral to be given. So there are some challenges, some things, and some operation do's and don'ts are there in the impact of the e-invoicing. So I'm now shifting my cursor to the login portal of the e-invoicing. So I'm sharing sharing screen. Yes. So these are the Cleartax. I have login through the Cleartax. So there is an option that a particular Excel tool generate an e-invoicing and the EWB view all invoices, where whatever the e-invoicing I have generated or not generated, view and manage the EWB portal, download the Tally connector and get started with the invoicing. These are the facility under the Cleartax login. And most important thing, the reports, the e-invoicing summary reports are there. I'm going through the portal, I'm login. So एक जो ऑफलाइन टूल गवर्नमेंट ने जो दिया है, द गवर्नमेंट एक्सेल टूल, which is the import data prepared and save on the government Excel format. There is a custom Excel template is there, Tally collector is there, Cleartax template is also there, where you can take this benefit. Similarly, it's an important task that if you have IRN and want to generate the EWB portal, so there is an option. आपको बार बार उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऊपर जाकर के EWB अलग से जनरेट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू हैव टू क्लिक इट. The Cleartax EWB template from the IRN, just you have to click it and check it on, then and click it on, then EWB is generated. I'm going through the government Excel template. I'm clicking on it, selecting my file. So there is a file is there where I have prepared all the data. So there is an uploading. Similar, this kind of uploading and the queue and the processing is there. I'm going through my view all invoices where I have generated all the e-invoicing. Let us see. So these are the dashboard under the view all e-invoicing. All documents are 5, where I have generated 1 IRN failed is 0, IRN not generated 2, and I have cancelled my 2 IRN. If I have to generate the IRN, I just have to click it on SS14 is the invoice number. IRN is not generated. Only I am pressing the generate button. So it means the IRN is being generated for one invoices. So let us see that SS14 is IRN is generated. What is the IRN of it? This is the IRN of that particular SS14 invoices. Similarly, you can download the invoices. You can also print the e-invoicing, print the EW bill. There is an also having facility under this. You can cancel your IRN, you can cancel your EWB portal, or you can also email to your supplier, to your recipient, to your chartered accountant, to your clients. Email. You can also email to the particular IRN generated e-invoicing. B2C में नहीं होगा क्योंकि B2C से रिलेटेड नहीं है. सो B2B इनवॉइसिंग में देखेगा IRN जनरेटेड आपके 2, पहले एक थे, IRN not generated 1. Again, you can import your invoices from your Tally connector or your BZ or any other Excel. Similarly, एक और मैं करना चाहूंगा SS15. देखेगा डिलीट का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे EWB
कैंसिल करने का ऑप्शन है, ईमेल का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है। मैं जैसे ही यहाँ पे जनरेट करता हूँ मेरा आयरन यहाँ पे जनरेट हो जाता है। सो इट्स वेरी इजी टास्क। अगेन मैं प्रोसेस बताना चाहूंगा, क्योंकि वे देयर आर लार्ज एंड मल्टीपल नंबर ऑफ द इनवॉइसेस, सो दिस काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर इज वेरी यूजफुल फॉर योर सेल्फ। यू कैन take the benefit of this. You can also take the demo under the नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जा करके आप डेमो भी ले सकते हैं और हमारा एक रेफरल यूज कर सकते हैं ताकि आपको उसके साथ कुछ डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी आपको मिल सके। सिमिलरली जहाँ पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ द इनवॉइसेस वाज देयर, let's say for example 500,000 of the number of invoices, you have to just check it on and just click on the generate button. all the invoices के ऊपर आयरन नंबर जनरेट हो जाएगा। आप चाहो तो उसको मेल कर सकते हो, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, आप चाहो तो उसको प्रिंट भी कर सकते हो। सो दीज काइंड ऑफ द फैसिलिटी आर ड्रिवन अंडर द क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। So I'm using it और I'm also यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें आप उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, बेनिफिट लें। और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या सॉफ्टवेयर आपको अगर अच्छा लगा, यू कैन ऑल्सो गिवन योर फीडबैक सो दैट वी कैन डेफिनेटली इम्प्रूव इट एंड फॉरवर्ड टू द कंसर्न पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ नई अपडेट के साथ हम अगेन मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, क्योंकि जीएसटी इज़ अ वेरी लॉन्ग गोइंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, नई चीज़ें सामने आ रही हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी की मदद से हमें अपने प्रोसेस को जितना ईजी हो उतना ईजी हमें करके चलना है और बेनिफिट इसका लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।